गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आप देख रहे हैं मैं रेडी हूँ बिल्कुल एक नई राइड के लिए। तो गाइस ये पेट्रोल पंप मिला है, यहाँ देखते हैं पेट्रोल है कि नहीं है। चलो जी पावर डलवा लेते हैं। गाइस हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर और यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। आप देख सकते हैं सारे बाइकर्स आ गए हैं। पाजी किधर है पाजी? गाइस हम पहुंच गए हैं, हमारे पाजी ये रहे सामने। ओ पाजी। तो गाइस अभी हमने नाश्ता कर लिया है यहाँ पर। तो गाइस ये देखिए फ्लैग ऑफ होते हुए और सारे राइडर्स निकलते हुए। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों बाद राइड पर आया हूँ और जितनी भी हमारी राइडें होती रही हैं वो सारी कैंसिल होती रही हैं ड्यू टू हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके वजह से हमारी जो थी राइडें कैंसिल हो रही थी। अब जो है आज मैं और पाजी आए हैं राइड के लिए। ओह बाइक से गिर गए भाई, गिर गए भाई, गिर गए। आराम से चलो यार, आराम से, ब्रेकिंग सिस्टम पे ध्यान दो। गाइस आपको लग रहा होगा पीछे एम्बुलेंस है और हम एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। वो एम्बुलेंस हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, हमारे ग्रुप के साथ है। कोई भी ट्रेजेडी होती है तो वो संभालेंगे। ये हम सारे जितने भी हैं राइडर्स सारे सेफ्टी गियर्स पहनते हैं। सेफ्टी गियर्स पहनने के बाद ही हमें अलाउ होता है राइड के अंदर आना। तो गाइस ऐसा देख करके कमेंट ना करें कि ये राइड वाले हैं और राइडर्स इनको एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे साथ ही हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, ये आगे हम आगे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ ओमैक्स की पार्किंग पर और ये जो पार्किंग है काफ़ी ऊंचाई पे बनाई गई है और यहाँ का जो नज़ारा है वो बेहद ही खूबसूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ वो नज़ारा क्या है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, क्या खूबसूरत नज़ारा है। वो जो आप सामने देख रहे हैं यह है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो गाइस ये है यहाँ की पार्किंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइकें सारी खड़ी हुई हैं, पार्क हो रखी हैं गाड़ियाँ। तो गाइस मैं इवेंट में पहुँच चुका हूँ और जो हमारा इवेंट है वो चालू हो चुका है। थोड़ा सा हम लेट हो गए। जाओ भाई जाओ, मैं राजस्थानी, सॉरी समझ गया। घूमर 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 भाई साहब। आज भी घर जाना मुझे, हो चुका हूँ लेट मैं, ये है जाना मुझे, घर पे खड़ी वेट है, अंधेरे सफर में परछाई काला मेल है, अंदर की ज्वाला। तो गाइज हमारा इवेंट अभी चल रहा है, इसी के अंदर चल रहा है, ओमैक्स के अंदर, और काफ़ी अच्छा इवेंट हो रहा है। चलिए लेके चलता हूँ अंदर आपको। गाइज ये हैं हमारे जजेस।
up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I
never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Thank you everyone, you all are very good. A huge round of applause for them. They all are writers, they are all not our professional models. कोई भी एक भी इसमें से प्रोफेशनल मॉडल नहीं है. तो गाइज़ ये हमें कूपन मिला है दावतपुर का और हम जा रहे हैं दावतपुर के अंदर अपना लंच करने के लिए। आप देख सकते हैं ये है वो, ये है हमारा दावतपुर। आगे हम इसके अंदर, यहाँ हमें मिला है बर्गर और कोक। चलिए लेते हैं, एंजॉय करते हैं। बर्गर किंग का बर्गर, फ्राइज़ और ये है कुछ पिज़्ज़ा का पफ और ये है हमारी कोक। तो गाइस एंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस एक बहुत बड़ी गलती हो गई, ये गलती हुई कि यार हम अपनी वाइफ को लेकर के नहीं आए। अपनी वाइफ को लेके आते और हमने पहले से नाम दिया होता तो आज हम भी उस स्टेज पे होते। तो हमारे नवजीत पाजी हैं। पाजी क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, थोड़ा सा रिग्रेट है कि एक अपॉर्चुनिटी थी जिसके लिए इनवाइट भी मिला था, पर ड्यू टू सम रीज़न वो मिस हो गई। बट ये है कि आगे के लिए अब हम ध्यान रखेंगे और अगली कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको छोड़ेंगे नहीं और ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी ठीक है, मैं मानता हूँ यार डेस्टिनी होती है, कई बार किस्मत होती है, कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो शायद वही हमारे साथ हुआ। बट कोई नहीं, बहुत मज़ा आया यार, बहुत ही प्रीमियम तरह का इवेंट था ये। ब्रेकफास्ट से लेके पूरा इवेंट जो देखा हमने, आज तक ऐसा इवेंट अटेंड नहीं किया जब से हम राइडिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त था और हैट्स ऑफ OCPR और बाकी जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट किया है। होपफुली हमने ये अटेंड किया, बाकी हमारे दोस्तों ने मिस कर दिया, वो भी आते तो शायद ये मज़ा और दुगना हो जाता। चलो अब आगे बात करेंगे विकास भाई आपसे। इवेंट हमने काफ़ी एंजॉय किया, मज़ा आया, ब्लॉग शूट किया, बहुत मज़ा आया। तो गाइज़ इसी के साथ हमारा ये इवेंट जो है वो समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपसे किसी नए इवेंट में। तो गाइज़ बने रहिएगा मेरे साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस। तो चलिए टाटा बाय बाय।